Prime Minister Modi and Russian President Vladimir Putin are addressing a press conference in the national capital. Let's cross live. Because Russia and the USSR have established the system of education institutions, diplomatic institutions and schools. And right now the educational center Sirius unites and brings all talented people together. India is also developing this area. It's good that thanks to the initiative of Mr. Prime Minister you were gathered here today. I hope it will be a good push forward for further contacts, not only among you but also among your peers. As for the influence of teachers upon all of us, it is of course important. Parents are important, family is important. And the moral values of the family are important. But upbringing and education is definitely something that plays a huge role because it depends on teachers and their attitude towards education and children. Taking advantage of this opportunity, I would like to once again congratulate all teachers of Russia. So I congratulate, and teachers of India, I congratulate everyone. भारत में शिक्षकों के लिए शब्द प्रयोग होता है गुरु। अगर अंग्रेजी डिक्शनरी में देखेंगे तो गुरु शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में भी है। और हम सब ने अनुभव किया होगा, दुनिया में किसी भी महापुरुष से बात करोगे जानोगे तो दो लोगों का उल्लेख वो अवश्य करते हैं। उनके जीवन में उनकी माता का और उनके टीचर का, इन दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं जब मुख्यमंत्री बना था आज से 18 साल पहले, तो मेरे मन में एक इच्छा थी मेरे जितने टीचर्स ने मुझे पढ़ाया उन सबको मैं इकट्ठा करूँ, मेरे घर बुलाऊँ और उनका सम्मान करूँ। तो मैंने खोजा क्योंकि हमारा नाता बीच में काफी टूट गया था। तो करीब 32 टीचर जीवित पाए गए, मिले मुझे। उसमें एक जो थे वो 93 ईयर के थे। उन सबको बुलाया, बहुत बड़ा सार्वजनिक समारोह करके मैंने उनका सम्मान किया कि आपने मुझे बचपन में शिक्षित किया था, संस्कारित किया, मेरे जीवन को दिशा दी थी। और उसी के तहत मैं आज ये काम कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए आगे इससे भी अच्छा काम करूँ। मेरे जीवन में टीचर को मैंने इस प्रकार से देखा। आज के युग में हम गूगल गुरु के ज़माने में हैं। कुछ भी पूछना है तो गूगल को पूछो, कुछ भी जानना है तो गूगल से जानो। और उसके कारण गूगल गुरु के ज़माने में टीचर का महात्मा कहीं कम न हो जाए, ये हमने सतर्क रहने की ज़रूरत है। जानकारियाँ देने के लिए तो बहुत रास्ते होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बनाने के लिए कोई न कोई हमें उंगली पकड़ करके चलाने वाला चाहिए। वो या तो माँ होती है या कोई एक व्यक्ति होता है जिसका टीचर का ही रूप होता है, वो हमारी ज़िंदगी को बनाता है। भारत के जीवन में शिक्षक का वो स्थान रहा है, ऋषि परंपरा से रहा है, और दुनिया में हर देश में शिक्षक के प्रति वो भाव भी है, शिक्षक का वो महात्मा भी है। तो हम लोगों की ज़िंदगी में वैसा ही है। Thank you so much, Prime Minister Narendra Modi and also President Putin. But our interaction with the student continues, and we have some more questions coming. The next student who has a question is Sanchit Agarwal. So, I have a question for the Honorable President of Russia, Mr. Putin. Sir, can you please tell all of us who is the scientist that impresses you the most? Знаете, это тоже зачем забрал? Забрал действующий. Why did you take away the mic that was working? Why did you take it from me? He took the working mic from me. Maybe he didn't want me to answer the question, I don't know.
You know, saying which scientist impresses me most is the same thing as saying which piece of art impresses me the most. It's hard to say. It's hard to say which book or which piece of music impresses me the most. We have a whole system of external factors: art, education. Of course, I can list all scientists, starting with Plato and all other scientists. They have all contributed significantly to the newest history. They have made a unique contribution to the development of humankind. These are not just talented people. They're very happy people. I really envy those who devote their lives to science, because science, as any art, is the most interesting thing one person can do, because it brings satisfaction and, while paying tribute to previous generations of geniuses, I would like to express hope that your generation will also make us happy with your achievements and make a contribution into development of humankind. I wish you every success. Thank you so much, President Putin. The next question comes from Elizaveta Zabelina. Добрый день, уважаемый Нарендра Моди, Владимир Владимирович. Я Забелина Лиза, лицей номер 19, город Королёв. В августе 2018 года я присутствовала на конференции с участием главы Роскосмоса. Дмитрий Олегович отметил. In 2017, I participated in an event organized by Roscosmos. Базы маловероятно. Как вы считаете, возможно ли осуществление лунной программы между стран БРИКС? Спасибо. Еще раз, повтори, пожалуйста, погромче. What do you think about space cooperation programs of BRICS? При создании лунной программы стран БРИКС. Спасибо. Должен сказать, что I must say that cooperation between BRICS countries, and this association has been created not very long time ago, brings meaningful contents to various areas. We are working together on finance. We have created a very modern and much promising financial instruments. We are agreeing on cooperation in other areas. Art, for example, we are thinking about cooperating more closely in humanitarian area. This is all possible, of course. And as concerns the future of our contacts with, I think that Mr. Prime Minister won't object that. If it's not in the agenda, we'll have a look at it and we will discuss it together with colleagues. Thank you so much, President Putin. The next question comes from Aryan Magnani. I have a question for the Honorable President of Russia. Sir, could you please tell us, according to you, which field of research should be prioritized over others? Well, you know, humankind cannot exist without new discoveries in physics and maths. Right now, such topics as genetics are receiving more attention. Biology, for example. The 20th century was the century of physics. The 21st century is the century of biology. Well, but we should understand it in a broader sense. And talking more precisely, this has to do with genetics, with genome development. The full disclosure of genome. Today it costs just
couple of dozens of thousands. In the near future, it will cost $1,000 or $100. This changes fundamentally the approach to genetics and genome, to healthcare in general, to medicine in general. Some unbelievable horizons open up in front of humanity and humankind. But from the point of view of theoretical and fundamental science, it's also important to research the origins of our universe. This is of practical importance. This has to do with navigation, with outer space exploration, with aviation. All this is very intertwined and interconnected. There are some more fashionable areas for research, of course, but everything that has to do with fundamental research will sooner or later turn into applied sciences. This is our understanding, the one that we've always had. Russia and India, all other states in the world, leading states in the world, who enjoy good scientific traditions, academic traditions, we will pay growing attention to fundamental and applied sciences. Thank you so much, President Putin. And this brings us to the end of the student interaction and the question and answer session. And now I would like to request Honorable President of Russia, Vladimir Putin, to share his thoughts on this occasion. Я вроде как раз этим часто занимался, но я в завершение хочу вас всех поблагодарить за тот интерес, который вы проявляете к сотрудничеству. Уверен, что with your counterparts. I'm sure that interaction between young people, especially between school children, would be a great addition and perhaps the most important addition to the unprecedented level of Indian and Russian relationships which we see these days. This is the basis for long-term cooperation. And I would like to thank you for that and wish you every success in your work. Thank you. A heartfelt thank you to President Putin for his inspiring words. And now I would like to request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to share his thoughts. फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरी बहुत घनिष्ठ दोस्ती है, लेकिन अब तक उनसे जो मुझे मिला है उसमें अगर मैं कहूँगा एक सर्वश्रेष्ठ उपहार मुझे मिला तो पिछले दिनों वो मुझे सोची ले गए, और सोची ले गए उतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा आग्रह करके मुझे सीरियस कैंपस में ले गए और आप सब बच्चों के साथ मुझे मिलने का अवसर दिया। अगर वो मुझे वहाँ नहीं ले जाते, सिर्फ मैं सुनता कि भाई ऐसे एक श्रीमान पुतिन ने एक इंस्टीट्यूट खड़ी किए हैं, बच्चे आते हैं, तो मुझे इतना अंदाज नहीं आता जितना वहाँ देख करके मुझे आया। शायद रशिया के भविष्य के लिए राष्ट्रपति पुतिन का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है। उनकी पूरी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को, कमिटमेंट को, इमोशंस को इस काम में उन्होंने खपा दिया है। और जब मैं वहाँ आया तो मैंने सब बच्चों से कहा कि आप में से हिंदुस्तान कौन आना चाहता है, और मैंने देखा सबने हाथ ऊपर किया था। तो उस दिन मैंने कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा। तो राष्ट्रपति पुतिन मुझे जब जोहान्सबर्ग में मिले तब मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप आइए, लेकिन अगर बच्चों को लेकर आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात को उन्होंने माना और आप सबको यहाँ लेकर के आए, और पिछले एक सप्ताह से भारत के प्रतिभावान बच्चे, रशिया के प्रतिभावान बच्चे, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, उनका इंटेलेक्ट काम कर रहा है, उनका साइंटिफिक टेम्पर काम कर रहा है, और दुनिया की समस्याओं को समझते हुए इस उम्र में हम क्या दे सकते हैं, इस पर आप लोगों ने अपना समय दिया,
आज जो हमने जो 5 प्रोजेक्ट देखने का मुझे अवसर मिला, वाकई मुझे लगा कि आप समस्याओं और संवेदनाओं को भली भांति अपने में समाये हुए हैं और तब जाकर के इस प्रकार के इनोवेशन का विचार आता है। तो आज जो प्रोजेक्ट बनाने वाले और पूरी टीम को मैं रोज पूछता था कि भाई इन बच्चों का कैसा है, वो कंफर्टेबल है नहीं है, और मुझे बताया गया हमारे एम्बेसडर ने कि जब आपको मॉस्को में बुलाया और आपको पूछा तो आपने कह दिया कि हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, हम तो पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि इसको आगे बनाए रखिए। मैं भी भविष्य में भारत कैसे होनहार बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में आए, आप भी यहाँ लगातार आए और भारत के और रशिया के होनहार बच्चे मिल करके मानव जात के लिए क्या कर सकते हैं, मानव जात की जिंदगी को सरल बनाने में क्या कर सकते हैं, जो जिंदगी में बड़ी मुसीबत से गुजरते हैं ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान हमारी तरफ से हो सकता है और अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन, उनके लोगों से भी आपका परिचय आया होगा। हम कौन सी रिसर्च करें कौन सी न करें, सबसे बड़ी बात है हम हर पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्पर तैयार करें, हर चीज को साइंटिफिकली देखने की आदत बने। वो साइंटिस्ट बने या न बने, लेकिन उसका टेम्पर साइंटिफिक होना चाहिए। इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है। जब इनोवेशन बंद हो जाएगा दुनिया वहीं अटक जाएगी। हमने देखा है मानव जात का विकास इनोवेशन के कारण संभव हुआ है। इनोवेशन होते रहने वाले, चैलेंज नई आते रहने वाली है, हर पल नया लोग देते रहने वाले हैं, उसमें से नया करते चले और हम भावी पीढ़ी को, मानव जात को क्या कुछ दे सकते हैं। गरीब से गरीब की व्यक्ति की जिंदगी, एक प्रकार से ईज ऑफ लिविंग, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये अगर हमारा समय और शक्ति लगेगा तो हमें भी जीवन में संतोष मिलेगा। मुझे खुशी हुई इस नई पीढ़ी को, दोनों देश की नई पीढ़ी को मिलने का मौका मिला। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Our deepest gratitude to Prime Minister Narendra Modi for his inspiring words. It's been an enlightening experience not only for these children present in this hall. Oh, I'm sorry. Я позволю себе два слова. I would allow myself to say a couple of words. Молодой человек спрашивал по поводу This young man asked интересных about направлений. the most interesting areas where we can work in. It's artificial intelligence, but without human intelligence, at least at this stage of development, it's impossible to imagine, to fathom that artificial one would be created. And in order to continue with that, those who deal with cognitive sciences understand that the main thing is to be able to work as a part of a team. So I'm really grateful to Mr. Prime Minister for inviting Russian talented young people to India. This is a practical step which shows that you are ready to work as part of a team. So we wish you every success, and once again, thank you very much, Mr. Prime Minister. I thank President Putin and Prime Minister Modi for gracing this occasion. A special round of applause to the two leaders for inspiring the young minds and taking out time from their busy schedule. Our sincere thanks also to all the participant individuals and institutions from Russia and India. We hope that this event marks a new beginning. All right, Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin there interacting with students in the national capital after their bilateral meeting. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.